Tigress, Ritu Phogat, and we'll go to our first question from the media. Jay Anderson from Cage Side Press. Congratulations on the win tonight, Ritu. I'm just wondering, you did have to overcome a fair amount of adversity in the first round. What was going through your head during that sequence? वो पूछ रहा है कि आपने बहुत कुछ go through किया होगा फाइट के टाइम में, तो आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में मैं मतलब पिछड़ रही थी, लेकिन लास्ट के 2 राउंड मैंने कम बैक किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने मुंबो को हराया। वो काफ़ी अच्छी अपोनेंट थी और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि आई एम द बेस्ट। She feels that she has done a pretty good job during the match, even though the first match I felt that I wasn't doing that great of a job, but then I managed to actually get through the next 2 rounds pretty well, and I've made sure that I was a very strong competitor against Meng Bo, and I've done a pretty good job, and I thank everyone for supporting me as well. Is that the sort of fight that you think is going to make you a better fighter in this tournament, make you stronger going forward, having overcome that? आपको लगता है कि ऐसे फाइट करने से आप स्ट्रांग हो जाएंगे एंड आपका फाइटिंग और अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब हम किसी एक अच्छे फाइटर को हराते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आता है और एक्सपीरियंस भी आता है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स वो चीज़ मोम्बो एक बहुत अच्छी फाइटर है और ऑटम वेट की सेकंड 2 कंटेंडर है, तो बिल्कुल उसको हराकर मुझे कॉन्फिडेंस भी आया है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। I feel that the fact that I've actually competed against a very strong fighter, I've managed to gain not only confidence but also experience, and that the way that I managed to compete with Meng Bo has really definitely helped to amp up my confidence at this point in time, and that is something that I want to take forth with every match that I'm going to be doing in the next round. And last one for me, we now know who the semifinalists are. It's going to be voted on by the fans, obviously, but out of Stamp Fair Tech's Itsuki Hirata and Sohee Ham, do you have any preference on who you face in the next round? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई भी जो भी आए मैं उसके लिए मतलब अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी हूँ और बिल्कुल मैं चाहूँगी जो भी बेस्ट हो, बिल्कुल मैं बेस्ट के साथ लड़के ही आगे जाना चाहूँगी और अपने आप को दिखाना चाहूँगी कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। I am ready to actually take on anyone that's actually being paired with me, and it doesn't matter who it's going to be. I am ready to take on the next challenge, and I am willing to actually put in all the effort, and I'm going to go forth and make sure that I prove myself and prove the fact that I am still the best in the competition. Congratulations again, and best of luck moving forward. Thank you. Thank you, Jay. Next up, we go to Dylan Bowker of My MMA News. Go ahead, Dylan. Appreciate you taking my call. I'm just kind of curious because when I spoke to Ritu prior to this fight, she was talking about the Meng Bo fight as, representing, a rite of passage sort of moment, so to say, in her career. Just, now that the ideal outcome is in the books, like, does it feel like that rite of passage moment now, just having got the ideal outcome? आपको लग रहा है कि ये जो फाइट हुआ था मैंगो के साथ कि आपको जो आउटकम चाहिए था मिल गया है? आपको लग रहा है कि ऐसी टाइप का जो आउटकम रहेगा ऐसी चाहिए आपको या क्या लग रहा है? क्वेश्चन नहीं समझी मैं। Can you please repeat that question again? Oh yeah, sorry. I was just saying that, prior to this fight, she was looking at Meng Bo as a moment that was indicative of a rite of passage, just, getting the ideal outcome. Does it feel like that rite of passage kind of moment? Okay. तो ये बोल रहा है कि इसके जीतने के बाद ऐसे पैसेज टाइप का लग रहा है कि कि करना पड़ता है, ऐसे गो थ्रू करना पड़ता है तो आउटकम मिलने के लिए। तो आपको लग रहा है कि ऐसी टाइप का कॉम्पिटिशंस आपको गो थ्रू करना पड़ेगा जो आपको चाहिए?
जो मिलने के लिए? बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि मतलब मेरे लिए हर मैच चैलेंजेस रहा है और हर मेरे लिए और मैंगो मतलब एक टॉप कंटेंडर को हराकर बिल्कुल एक चैंपियन जैसी फील आता है कि मैंने जो मेरे ऑटम वेट कैटेगरी में नंबर 2 कंटेंडर है, तो बिल्कुल उससे मेरा कॉन्फिडेंस और मैं भी चाहूंगी कि आगे भी मैं बेस्ट से बेस्ट फाइटर के साथ लड़ूं और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको और भी अप लेके जाऊं और अपना एक्सपीरियंस और भी बढ़ाऊं. I feel that yes, definitely it is a rite of passage, but it's something that I've had to go through to be able to achieve and to be able to do what I want right now and to be able to compete the way that I do right now. And even though this is one match, although it was a difficult match with Meng Bo, I know that with the other competitors and the upcoming matches that's going to happen, that is definitely something that I will have to look forward to. And although the outcome might change and it might not be ideal, that is something that I'm more than happy to prepare myself for and also make sure that this is something that is always going to be in my favor. Definitely. And just as a quick follow-up, just having beat the second-ranked atomweight here, is a spot in the next rankings rollout something Ritu looks forward to at all, or is placement within the rankings not at the forefront of her focus at all? जो अभी रैंकिंग निकलने वाला वो प्लेसमेंट आपको मैटर करता है कि as long as आप वो एटम वेट में रहेंगे आप खुश हो जाएंगे? मेरे लिए इतना मैटर नहीं रखता. मैं यही चाहती हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट अपना बेस्ट से बेस्ट करूँ और मतलब सबको ये दिखाऊं कि मैं मतलब ऑटम वेट कैटेगरी में आई एम द बेस्ट. और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंबर 2 हूँ, नंबर 3 और रैंकिंग मेरे में क्या. मैं बस अपने आप को बेस्ट मानती हूँ और बिल्कुल ये very soon I will show all the world I am the best in the autumn weight category. I feel that the placement will not matter as much as long as I aim to reach the goal that I've always set out myself to achieve, which is to becoming the atom weight champion. And eventually, once I do that, whatever placements that happen within the other competitors and everything, it doesn't really matter to me as much. And I will prove myself and become the atom weight champion at the end of the day. Well, I appreciate the insights and congrats on the awesome performance there, Ritu. Thank you. Our next question comes from Jonathan Selvaraj of ESPN. Go ahead with your question, Jonathan. ऋतु जी नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया खेला आपने. काफी फाइट लोग देख रहे थे इंडिया में. आपने पिछले 3 मैचेस में थोड़े हेवी पंचेस लिए हैं. जब ये माने पंचेस लगते हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, और जब आर्मबार लगा था तो उस टाइम आपको लगा था कि फाइट खत्म होने वाला है या फिर क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. बिल्कुल मैं चाहती थी मैं बिल्कुल चाहती हूँ मैच में कि अपोनेंट मेरे को मतलब पंच करे तो मेरा मतलब जो एग्रेशन है, जो अग्रेसिव, मैं और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ. और जब आर्मबार की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा. मुझे ये था कि हाँ मैं इजी से कर लूंगी और ये मेरी बेस्ट पोजीशन है. मैं इसको आराम से कंट्रोल करके आराम से अपनी जो मेरा बेस्ट पोजीशन है मैं उसमें ले आऊंगी. बिल्कुल. और दूसरा सवाल था आपसे, आपके सारे मैचेस में आप साइड कंट्रोल, टॉप कंट्रोल बहुत ऐसे लगता है आराम से आप ले लेते हैं. आपको अभी भी लगता है कि जैसे आप ग्राउंड एंड पाउंड से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप जूडो भी लाएंगे इसमें, आप कुछ और आप आगे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ और मैं अपनी रेसलिंग को और भी ज्यादा बेटर बनाना चाहती हूँ. अपने ग्राउंड रेसलिंग को और भी बेटर बनाना चाहती हूँ. अपनी स्ट्राइकिंग को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ. तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है. फिर से पहले राउंड और जो लास्ट राउंड में जो नी लगा था आपको जब आप टेक डाउन के लिए जा रहे थे, ये कहना कि पंच आप चाहते हैं कि लोग पंच मारे आपको, उससे आपके टेक डाउन में भी आसानी होगी, ये कहने की बात है. बट जब लगता है वो उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है? आप सोच रहे हैं कि बचना है बस, या फिर क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था. मुझे यही था कि मुझे अपने जो मेरा अटैक है जो मुझे करना है वो करना है. तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे मतलब जब उसने पंच किया तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था. बस मुझे
कोच जो भी पीछे से बोल रहा था मैं उसको फॉलो कर रही थी और मैंने बिल्कुल वो चीज फॉलो की. Okay, thank you, Ritu. Thank you. We'll take our next question from Jack Gotzel of Tops Off Sports. Ritu, it seemed that the momentum all changed at the beginning of that second round. Was there something your corner said to you that caused the momentum shift, or was that all you? I'm sorry, Ritu, please hi. repeat that? Oh, sorry. Am I So supposed the to translate? Sorry. You can go ahead. So the momentum all changed in that second round. Was there something your corner said to you to change the momentum, or was that all you? Yeah. मैं जब फर्स्ट राउंड के जब मैं आई तो मेरे कोच ने बिल्कुल मेरे को बताया कि मुझे क्या करना है और मैंने सेकंड राउंड में जाकर बिल्कुल जो मेरे कोच ने बोला था जो गेम प्लान बनाया था मैं उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज की और बिल्कुल वो सक्सेस हुई. We have our translator. Sorry. Yes, I am here. Hello. Hello. Yep. Hi. Go ahead. Can you hear me? This Yes. is Natasha. Hi, Natasha. Hi. I'll be translating for Ritu, if that's all right. Okay. Lovely. Continue with your question. So Siho Ham may be your next opponent. How do you feel you match up with her? मुझे यही है कि कोई भी हो मैं बेस्ट से बेस्ट के साथ लड़ना चाहूंगी ताकि मुझे भी मतलब जब हम बेस्ट के साथ फाइट लड़ते हैं तो हमें हमारी कमजोरी का पता चलता है हमें हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि जो भी बेस्ट हो मैं उसके साथ फाइट लड़ना चाहूंगी. She's saying that she just her sole aim is to just work and fight with the best opponent, and she just wants to prove herself. So all she wants to do is focus on her capabilities and bettering her capabilities, no matter who her opponent is. Awesome. Thank you so much, Ritu. Very impressive performance. Our next question comes from Raj Shaker of Essentially Sports. Go ahead, Raj. Hello. First of all, I would like to congratulate Ritu for a spectacular win. A lot was said, a lot was before the fight. Meng Bo said that she's going to knock out Ritu in the first round, which she couldn't absolutely. Instead, she got outclassed. So, and a lot of people also doubted Ritu's validation, Ritu's spot in the ongoing Grand Prix quarterfinals. So, does she have any bad blood left inside her, or is it all done and dusted inside the cage? रितु जी आपसे पूछ रहे हैं कि मेंग बो ने मैच के पहले काफी ये बोला कि वो आपको हरा देंगे और उन्होंने काफी बात की और इसके बारे में और लोग आपकी कैपेबिलिटीज पर भी काफी डाउट कर रहे थे. तो अब मैच खत्म हो चुका है, आप जीत चुके हो, अभी आपको कैसे लग रहा है? बिल्कुल काफी अच्छा लग रहा है और मैं जो भी मेरे अपोनेंट मैच से पहले जो भी बोलते हैं तो मैं उनको बिल्कुल पॉजिटिव लेती हूँ और मतलब उसको मतलब स्ट्रॉन्ग वे में लेती हूँ और तो बिल्कुल वो चीज ली और मैं मुझे यही है कि कोई भी कुछ बोले मैं उसको कभी नेगेटिव नहीं लेती, उसको पॉजिटिव वे में लेके और अपने आप को मतलब 110% देती हूँ और उनका जवाब मैं रिंग में जाके अपने आप मिल जाता है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती. So Ritu basically says that no, there isn't really any bad blood, and in fact, she draws some sort of inspiration from any sort of pre-match talk, and she draws positivity from whatever negativity or if there's anything that's being said about her, any doubts that are cast, she proves herself in the ring, and she just tries to draw positivity from everywhere. Hello, was I audible? Hello. Yes, you were audible. Yeah. So, like I said, Ritu said that there isn't any bad blood between her and her opponent, and no matter what anybody says, she really doesn't pay attention to that, and all she tries to do is derive strength and positivity from whatever doubts that people have, and her sole aim is to go into the ring and prove herself, which is what she did today. So just a quick follow-up. Hirata, after her fight, said that she would love to fight Stamp Fairtix next. But as per the statistics, both
Ritu and Stamp are at 6-1 right now, so that's a perfect matchup. But yeah, Hirata somehow managed to call out, or didn't call out, but expressed her intentions to face Stamp Fairtex next. So does Ritu feel that the other fighters at the atomweight division are ducking her after her impeccable success? Hello? I'm Hello? so sorry. Hi. Yeah, Could you yeah. repeat the question? It was a bit long. I'm so sorry. Yeah, absolutely. Hirata actually, after her fight, said that she would love to face Stamp Fairtex next. But if you look at the statistics, Stamp and Right. Ritu stands at 6-1 both. So it's a really prominent matchup. But Hirata, for some reason, didn't call out Ritu or express intentions in Stamp. So does Ritu feel that she's being avoided by the other fighters, especially after her back-to-back success against veteran opponents? रितु जी ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि दूसरे एटम वेट चैंपियंस आपको अवॉइड करेंगे, आपसे डक करेंगे आपके बैक टू बैक सक्सेसेस देख के? बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रेसलिंग का डिफेंस किसी के पास में नहीं है, तो बिल्कुल सभी बचना चाहेंगे मेरी रेसलिंग से, मेरे टेक डाउन से. She says she feels that her wrestling defenses are really gotten really good, and her opponents should be fearful of her wrestling defenses. And yeah, she's not surprised about the fact that people might be ducking her or might be fearful of her after her successful wins. Now, my last question would be: there's already a rain on social media in India. Like, people are constantly praising Ritu. We have seen posts from Geeta Phogat. They have already started congratulating along with other fighters. So, did Ritu have a chance to speak with someone from India? If yes, what did they say? रितु ये पूछ रहे कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट डालना चालू कर दिया है इंडिया से, तो मैच के विन के बाद क्या आपने इंडिया से, आपके घर से किसी से बात की, और उन्होंने अगर बात की तो क्या बात हुई? बिल्कुल, मेरी सबसे पहले पापा से ही बात हुई थी, तो बिल्कुल पापा खुश हैं, लेकिन अभी बोले कि अभी और भी बहुत सारी मेहनत करनी है, अभी इस मेहनत से काम नहीं चलेगा. तो बिल्कुल सबसे पहले पापा से बात हुई और फिर बहनों से बात हुई. Yes, she said she's spoken to her family, her father first of all, and he told her that, well, this is great, but he kept motivating her, saying you have to do better and don't let this single success get to your head, and you have to do much more. And she even spoke to her sisters, who congratulated her. Thank you so much for the time, Ritu. Thank you. Thanks, Raj. We have our next question via text from Rahul Shabra from One Dojo, who asks, how was the first round when you got hit and were in an arm bar? Did you think it was over? पहला राउंड आपका कैसे था, और अब जब आर्म बार में थे तब आपको लगा क्या ये मैच फाइट खत्म हो गई है? बिल्कुल पहला राउंड बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा मतलब एक पल में भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आराम बार होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस पोजीशन से आराम से इजी से निकल सकती हूँ और बेटर पोजीशन में आ सकती हूँ. She said at no point did she feel that she was losing the match, and even though she was in an arm bar, she really didn't think that she knew that she could get back and fight against it. And yeah, she was confident of herself. Our next question from Rahul, who says, who are you eyeing next in the Grand Prix, even though the fans will be voting? Could you repeat that? Yes, I know she's touched upon this already in many respects, but yes, who are you eyeing in the Grand Prix, even though it will be the fans that will vote? आप चाहते आप कौन सा अपोनेंट चाहते हैं ग्रांड प्री में? या हम पता है कि फैंस वोट करेंगे, लेकिन आप किससे फाइट करना चाहेंगे नेक्स्ट ग्रांड प्री में? मैं किसी के भी साथ लड़ने के तैयार हूँ. मैं अपने नेक्स्ट मेरा कोई भी हो, मैं बेस्ट से बेस्ट फाइटर के साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ. Like Ritu's already said that she is prepared for anybody who comes in front of her. All she wants is the best fighter so that she can prove herself and win. And her confidence level is given a boost. So no, it doesn't matter who it is. Rahul will now join us. Rahul, your mic is open to ask another question. Great, thank you so much. What a spectacular win.
You almost had most of the Indian MMA fans in tears with that comeback in the first round. We're so proud of you. Now, in the atomweight division, you're making a mark. I'm sure after this win, a lot of people will be scared and will be ducking you. Now, Stamp Fairtex is somebody who's defeated the other two Indian atomweights in the division. That's Pooja Tomar and Asha Roka. Would you like to take on Stamp first and avenge the loss that she's given to the other two Indian atomweights? जितू ये पूछ रहे हैं क्या आप स्टैम्प फेयरफिक्स को पहले क्या आप चाहेंगे कि वो आपके अपोनेंट हो क्योंकि उन्होंने दूसरे दो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराया है? मैं बस यही कहूंगी कि कोई भी हो, बेस्ट कोई भी जो भी हो, मैं बेस्ट के साथ लड़के अपने आप का मतलब मैं अपने अंदर देखना चाहती हूँ कि मेरे में कितनी ताकत है, मेरे में क्या कमजोरी है। तो बिल्कुल मैं बेस्ट कोई भी हो और बेस्ट को हराकर ही मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट जीतना चाहती हूँ। So Ritu essentially is sticking to what she said earlier, that she wants to fight the best so that she can prove herself and win. So no matter who her opponent is, and she isn't really fearing anybody, whoever comes in front of her in the ring. All right, thank you so much. Now, Ritu, do you have a small message to all your Indian MMA fans who were sitting and cheering for you? बिल्कुल, मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी तरह अपना प्यार और अपना साथ मुझ पे बनाए रखें। बहुत जल्दी मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगी। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप योर लव विद मी। Ritu, thanks Congratulations, everybody. Ritu. And yes. No, that's all right. I think that was self-explanatory. Great. So congratulations, Ritu, once again. Wish you all the best. Thank you. Thank Thanks, you, Rahul. Ritu. Next up, we'll go to Rup Sarkar from One Dojo. Rup, your mic is open. Hello, Ritu. First of all, congratulations for your win. Thank you. My question is, in the first round, Meng Bo tried to knock you out with some good punches, where you also planted some heavy punches. How you planned to counter the punches and you came back really strong? Sorry. Should I repeat the question, ma'am? Yeah. So my question is, in the first round, Meng Bo tried to knock you out with some good punches. Yeah. Where you also planted some heavy shots to Meng Bo. So how did you plan to counter the punches? बिल्कुल फर्स्ट राउंड में मेंबो ने बहुत सारे पेंस किए और उनके मतलब वो पेंस सक्सेस भी हुए। लेकिन मुझे सेकंड राउंड में जब मैं आई तो मुझे यही था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मुझे वो करना है। मुझे स्ट्राइकिंग पे ज्यादा ध्यान न देकर अपना जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे करना। तो वही चीज मैंने किया सेकंड और थर्ड राउंड में। All right. So my second question is, as you in the way to the semi-final, how are you going to prepare yourself for the fight, and is there any difference in the training for this upcoming semi-final fight? सेमीफाइनल के लिए आप कुछ ट्रेनिंग चेंज करेंगे या यही अभी रहेगा या कुछ चेंज रहेगा आपकी ट्रेनिंग में? बिल्कुल, ट्रेनिंग तो बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट करनी है और आगे और भी ज्यादा टफ अपोनेंट आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को और भी बेटर बनाना है। तो बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होगी। All right, that's it from my side, and congratulations on your win. Thank you. Thank you. Thank you. Our final question comes in via text from Faraz Farhan from Singapore Strike Sports. He asks, you were nearly close to losing the match with the submission and the close knockout early on. What did your coach say to you after every round? बिल्कुल आफ्टर मेरे फर्स्ट राउंड के बाद मेरे कोच ने मेरे को बताया कि अपने आप पे बिलीव कर और जो तेरी पावर है, तेरी रेसलिंग है, उसको यूज कर और प्रूव कर। यही टाइम है, यही तेरा टाइम है और दिखा दे कि तू सबसे बेस्ट है। और मैंने सेकंड और थर्ड राउंड में जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने जो भी मेरी पावर थी रेसलिंग, मैंने उसको यूज किया।
So Ritu essentially says that her coach gave her a pep talk after the first round and a motivational talk after the first round, and kept telling her to believe in herself and her capabilities, and just focus on winning and strike and dominating and making sure that she wins. And that's what made her sail through the second and the third round. Ritu Phogat, you are a star. Thank you so much and congratulations. Thank you, Andrew. Thank you so much.